Congress spokesperson Anand Sharma today said that the NDA government has failed to deliver its pre-poll promises in the last 100 days. Speaking to media, Sharma said that during the campaign for the Lok Sabha elections in May this year, BJP had assured people that after forming the government at the centre, they will solve all the problems like inflation, unemployment and crime against women. चुनाव से पहले बीजेपी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश की जनता को बड़े सपने दिखाए थे, सब्ज बाग दिखाए थे, बड़े वायदे किए थे। शायद कोई विषय नहीं था जिस पर आश्वासन या वायदा ना दिया गया हो। कीमतें कम होना, ज़रूरत की चीज़ें सस्ते दाम पर उपलब्ध कराना, युवाओं को रोज़गार देना, महिलाओं पे अत्याचार बंद करना, शासन और प्रशासन में सुधार लाना, मिनिमम गवर्नमेंट मैक्सिमम गवर्नेंस, दुर्भावना से काम नहीं करना, बदले की भावना से काम नहीं करना, संस्थाओं का सम्मान करना, ये तमाम बातें प्रधानमंत्री ने कही थी। He further said that during the first 100 days of the Prime Minister Narendra Modi-led NDA government, inflation has moved northward, prices of diesel has been raised and the prices of essential commodities like onion and tomatoes have also been increased. 100 दिन के अंदर देश में महंगाई बढ़ी है, डीजल के दाम बढ़े हैं, किराए बढ़े हैं, जो आम ज़रूरत की चीज़ें हैं, खाने पीने की चीज़ें हैं, उसकी कीमतें बढ़ी हैं। देश के अंदर टमाटर महंगा मिलता है, पेट्रोल सस्ता मिलता है। तुलनात्मक दृष्टिकोण से ये भी एक वास्तविकता इस देश की है। Sharma said that NDA government's foreign policy is totally directionless and alleged that the government is trivializing India's bilateral, regional and multinational engagements. This government does not have an effective foreign policy. Its approach is opaque, directionless. They have been trivializing India's bilateral, regional and multilateral commitments and engagements. As is evident when, despite the visit of the Prime Minister to Bhutan, which is very welcome and very important, and we have fully endorsed that, subsequently, when the SAARC economy ministers had to meet to take forward the regional trade agreement and arrangements, India was absent. Powered by NNIS.